नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी की आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा के 1764वें पड़ाव पर आप सभी का पुनः स्वागत। वी वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिक्स सोसाइटी आयुष समृद्धि ज्ञान गंगा ऑन द माइलस्टोन of 70 and 164. Today, the topic of discussion is neuro disorder, nervine disorders. आयुष ट्रीटमेंट, तंत्रिका विकार, आयुष चिकित्सा। काय चिकित्सा के मूर्धन्य विद्वान हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित है। यंग एज से लेके और हमारे सीनियर लीजेंड्स तक हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। मैं आदरणीय प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर को सभी के स्वागत प्रवचन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद प्रसन्न शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने बताया कि हम आज अपने 1764वीं पायदान पर तंत्रिका विकार के संबंध में आयुष चिकित्सा विषय पर चर्चा करने के लिए आज की वेबिनार आयोजित की है, और जिसने हमारे इस मंच को शोभायमान करने के लिए, अलंकृत करने के लिए और अपने ज्ञान से हम लोगों को लाभान्वित कराने के लिए जो एक पैनलिस्ट की सीरीज है, पूरी लिस्ट है, उससे प्रोफेसर हमारे ये प्रोफेसर एस.वी. त्रिपाठी सर है, और प्रोफेसर वी.डी. अग्रवाल सर है, प्रोफेसर निशांत शुक्ला जी, प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद साहब, और साथ में हमारी यंग साइंटिस्ट डॉक्टर आरती प्रभा जी। और ये सभी लोग आज के साथ अपनी अच्छी तरीके से हम लोगों को इसके बारे में चर्चा बतलाएंगी कि हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, आयुष के दृष्टिकोण से इस तंत्रिका विकार पर कैसे इसको हम कंसीडर करते हैं, कैसे लेते हैं और कैसे मैनेज करते हैं। ट्रीटमेंट एक पार्ट है, लेकिन मैनेजमेंट उससे इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही तंत्रिका विचार हमारे मन में ये पढ़ने में आया, तो उनमें सबसे पहला जो एक सिद्धांत या भाव आया, वो आचार्य सुश्रुत की दी हुई अपने स्वस्थ की परिभाषा के तहत जो निचली लाइन आती है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना। हमारे मन की प्रसन्नता अगर रहती है तो तंत्रिका विकार की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि हमारे शरीर का जो राजा है वो ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर ही एक चीज ऐसी रहती है, इसको मन कहते हैं। और मन और इंद्रियों के सभी तरीके से अविकारज अवस्था अगर बनी रहे, तो हम सामान्य रूप से जो पहले तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस सिस्टम, और उसके बाद लेके दुनिया भर के दूसरे पार्किंसनिज्म, अल्जाइमर्स और डाउन सिंड्रोम, और क्या कुछ बैलेंस खराब या पैरालिसिस, बहुत सारे से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो जब तक हम मानसिक स्तर पर अपने को सामान्य रख सकें, या मेडिटेशन में रहें, या मन को न थकाने की स्थिति में रखें, बुद्धि का उपयोग करें, और यही रास्ता हमें योग सिद्धांत के द्वारा बताया जाता है कि हम मन को अपने किसी भी तरीके से, विभिन्न तरीकों से, साधनों से अगर हम अविकारज अवस्था में रखें, या उसके दास न बने मन के, बुद्धि के निर्धारण के अनुसार मन की हिसाब से चले, तो हम तंत्रिकागत बहुत सारे विकारों से बच सकते हैं। लेकिन क्योंकि मनुष्य शरीर है, वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रतिदिन किसी को कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जब तंत्रिका विकार जैसी स्थिति पर से गुजरना पड़ सकता है। वहां पर आयुर्वेद की विभिन्न विभिन्न चरणों की मैनेजमेंट और चिकित्सा के लिए हमारे आदरणीय आज के अतिथि वक्ताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और उनसे ज्ञान की अभिलाषा, पिपासा है कि अपने लंबे अनुभव और अपने अध्ययन अध्यापन के अनुभव के आधार पर हम लोगों को आज की इस विषय पर अपनी ज्ञानवृद्धि कराएंगे अपने वक्तव्यों के द्वारा। बहुत बहुत सबका स्वागत है। सर अग्रवाल साहब भी आ गए, उनका स्वागत है। शुक्ला जी आ गए, पाठी सर और आरती जी, सबका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमारे साथ मूर्धन्य विद्वान आशीर्वाद देने के लिए आ चुके हैं। उनकी आज्ञा लेके मैं डॉक्टर आरती प्रभा को सबसे पहले बुलाता हूँ, क्योंकि हम लोगों के सामने बच्चे डेवलप हों, ग्रूम्ड हों, तो वो सबसे डेवलपमेंट की बात रहती है। डॉक्टर आरती प्रभा, वेलकम। थैंक यू सर।
Om Namah Shivaya. My humble pranams to all the gurus present in this webinar. So I'm sharing the screen. So I am presenting neuro disorders AYUSH treatment. So there are a lot of neurological disorders, n number of neurological disorders. Like in Ayurveda, in Charaka Samhita Sutrasthana, we have a list of 18 Vatacha Nanatmaja Vikaras. Likewise, in modern also, there are n number of neurological disorders. Some of them may be very profusely seen, and some of them are mild in nature. But I have made an attempt to classify them just for the understanding of the areas. So, tumors, there may be malignant and benign tumors related to the neurological system. Then, seizure disorders, seizures, generalized seizures, simple, complex, grand mal, absence seizures, all those kinds of seizures can be there. Then, disorders of development are there, in which there are maybe inherited disorders of in development, then the diseases like Down syndrome, then metabolic disorders, toxic chemicals related developmental disorders. Then there can be degenerative disorders like Parkinson's disease or the entire Parkinson syndrome, then Huntington's chorea like diseases, then Alzheimer's, then multiple sclerosis, then the neurological infections like bacterial, viral, etc. Then there are another class of diseases like cerebrovascular accidents, which may include hemorrhagic strokes, obstructive or thrombus, embolus related. Then there are mere headaches and facial pain, out of which the causes may be the primary migraine, then the cluster headaches, then tension type headaches, primary or secondary, then due to the intracranial pressures, then meningeal irritations, giant cell arthritis, then metabolic disturbances, facial pain, trigeminal neuralgia basically, then herpetic neuralgias, etc. So, this is just to have a general idea of the diseases in the neurological disorders and what classes they belong to. So, basically, the divisions or the Vata Bheda, divisions of Vata, and the different karmas, which are very important in clinical practice. So, there are Prana, Udana, Dhyana, Samana, and Apana. So this pranavada, which is more seen in the functions like buddhi, hridaya, indriya, chitta, drik. That is the association and the relay centers like thalamus, cranial nerve nuclei, visual association area, all the functions exhibited by all those areas, we can sense the presence of prana there, like buddhi, hridaya, indriya, chitta, drik. Then this Udana, the properties are Vak, properties, not property, the karmas are Vak Pravarti, Prayatna, Urja, Bala, Varna, Smriti Kriya. So the higher mental functions, we can sense of higher mental functions where the presence of Udana is there. Next is Vyanavada. Basically, the karma of Vyanavada are Gati, Akshevana, Uksheva, Nimesha, Unmeshanadi Kriya. So we can understand it as a motor functions of more neuromuscular system and the coordination activities of the neuromuscular systems. So gati, akshevana, ukshevana, nimesha, unmesha, adikriya. So next is samanavada, we know neurological control of digestion, metabolism, etc. So next is the apana vata, which is shukra artava shagrat mutra garbha nishkramana kriya. This is the actual karma of apana vata, shukra artava shagrat mutra garbha nishkramana kriya. So the motor control of almost all the lower systems of the body, lower system in the sense all the systems present towards the lower side of the body. So reproductive system, may it be excretory system, all the neurological control of all those systems.
So the main pathological process or the reason that lead to Vada Kopa are either Avaranam or the Dhadukshayam. Apart from these two reasons, there may be the acute Abhighataja type of injury, but there also either Dhadukshayam, profuse Dhadukshayam will be there. So basically, Avaranam and Dhadukshayam are the causes. So we are actually treating either the Avaranam or Dhadukshaya in Vadakopa. So first step is to identify whether it is an Avarana or Dhadukshaya in nature. So outlook of the nervous system. So if you look, it's not according to any reference from the text. Just for understanding the treatment aspect, I have made this order. So basically, muscle, then neuromuscular junction, peripheral nerve, then nerve root, spinal cord, cerebellum, midbrain, and the innermost cerebrum. So so when we consider this muscle, so the muscle related many disorders are there, like DMD, limb girdle related. So the concept in Ayurveda, the concept of Gadavata can be, we can implement the concept of Gadavata which related to the muscles, and the Chikitsa principles related to the Gadavata can be utilized here. Then this neuromuscular junction, the example like myasthenia gravis and all, here we can suspect the more predominance of Vyanavada visation or the KOVA. So the treatment options may be the Vidaryadi Gana, which is mentioned in the Ashtanga Hridayam, then use of rasayanas like Shila Jadu, which have a direct action on Vyanavada, so can be made useful in neuromuscular junction related diseases. Then peripheral nerve related diseases like diabetic neuropathy, then even related to chemotherapy, then chemotherapy induced peripheral neuropathy. Here, even if the signs and symptoms are particularly related to and associated to peripheral nerves, but the root of the disease or the root of the problem is actually from some other system also. So multifactorial treatment options are to be taken in case of the peripheral nerve disorders, in order to have the complete cure of the disease. Otherwise, it will be like maintaining or giving a temporary relief for the patient. The next is a nerve root. So many radiculopathies come in this nerve root disorders. So in radiculopathies, this Eranda Thailam, Sindhuvara Eranda Thailam, then Leshuna Rasayanam, all these have a great property here, great acting property here. So this Leshuna Rasayanam, whether it will be Avaranajanya or other also, Leshuna is very much beneficial. So in all the Avarana conditions, the Leshuna is the best treatment choice. The reference is actually from Ashtanga Hridayam, Ashtanga Hridayam. So Sarva Avarananam Leshanam is indicated. So Erenda Thaila Sindhuvara Eranam. The Sindhuvara has the mode of action or target of action till the nerve root. So in case of radiating pain or radiating LB and all, if the Sindhuvara Erendam is given for 2 or 3 days itself, that radiating kind of pain can be arrested in the patients. So next is about the spinal column. The diseases like syringomyelia, then other myelopathies, polymyelitis, then motor neuron diseases, uh, or other contusion injuries, or a trauma, RTA injuries, all can be seen in the spinal column disorders. So this is something which is very deep. So the concept of management, like from spinal cord, cerebellum, midbrain, cerebrum, and all, it's very much deep. And the concept of management, what I feel is urtha moolam adashagam. That is whatever it is given to the urthva, the head, the action or the therapeutic benefit will be there for the entire body. So here, the more
Taila Prayoga is very important. So then the idea of exclusive Rasayana Prayoga, which has the direct action, target of action in the nervous system, or the simultaneously the use of multiple Rasayanas, because for different Vada Bheda, the Rasayanas acting will also be different. So judicious selection of the Rasayana, which acts in the multiple level, can also be used simultaneously. Then, when related to the cerebellum and all, usually it is called D symptom, the pons medulla cerebellum. The cranial nerve lesions can be there. The commonly D symptoms, it's known as D symptoms like diplopia, dysphonia, dysarthria, dysphagia, etc. Then there was a, I know a case treated like a brain tumor in the near to medulla, not exactly inside the medulla, near to the medulla. So head is the kabasthanam. So administering or the procedure Vamana by the concept like it's a Kabasthana in Kabasthana Kabavriddhi, so Kabakova. So administering Vamana by doing 3 to 4 sittings of Vamana by following the entire particular protocol of Vamana, the tumor size was reduced actually. In MRI, the size of the tumor was reduced, and it is well documented also. I'm not sure whether the case report is published or not, but I know such a case. So the concept of treating was the principle behind the treatment was in Kabha Prakopa in the Kabasthana, so Vamana. But actually, that kind of thinking. I don't know how much it is. I don't have a personal experience, but I've seen cases being treated in this way also. Then coming to the midbrain lesions, the diseases like Parkinson's disease, usually when talking about the Parkinson's, Kabaja Avarana can be suspected. So again, this Leshuna Rasayana, which is Avarana Haram, then Kapikacha Churna with Hani as Anubana, which is found to replenish the dopamine level transmitter. It has the target of action at the level of transmitters, neurotransmitters. Then also the Sahajaradi Gana drugs can be used and administered in different kind of preparation like Vada as Churna itself, or basically if it is treated with Grida and given in a Grida mode, because Grida only has the blood-brain barrier function among all the medicine or among the food items. So Grida, if we are advocating, if we are treating the medicinal drugs or the medicinal raw form with the Grida and administering to the patient, then it is easy to cross the blood-brain barrier and reach the target, whether it will be in the cerebrum, midbrain, cerebellum, or spinal column. So the other Durva Swarasa also has the target of action in the Urdhva. Then Varuni Thailam, it's directly indicated and very much beneficial clinically and practically in the Parkinson's disease like degenerative diseases. Next is about cerebrum. The cerebrovascular accidents like stroke, maybe hemorrhagic or other, then organic lesions. All come under cerebrum level. So the functional aspect of brain and structural abnormalities are there. So in cerebrum, by clinical experience, I'm saying for structural abnormalities, Brahmi Grida is more useful, and whether then functional abnormalities or the functional aspect, the Kalyanaga Krita is more beneficial. So usually the structured abnormalities leads to functional abnormalities. By taking a detailed history and after a proper diagnosis, the judicious selection of the medicine is very important. From the clinical point of view and the past experience, I'm saying for the structural abnormalities, Brahmikrita is important, and functional abnormalities, Kalyanakakrita, has been found more beneficial. So that was the general idea or the briefing of the general line of management in the Ayurvedic way for the neurological disorders.
Thank you so much for the patient hearing. This was my presentation. बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश Thank शाबाश you. शाबाश, Thank you, बहुत sir. ही शानदार। मैं अब Thank you. गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अभी ओणम में रुकना, ओणम में भी आपका स्पीच है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। मैं अब आदरणीय विष्णुदत्त अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ उनके विचारों के। आदरणीय डॉक्टर विष्णुदत्त अग्रवाल सर। Thank you, Dr. Pawan Sharma ji, Dr. Vinotri ji. You also include me in spite of my problems. You always include me. I'm thankful to you. Today about the neurological disorders. Everybody has a different concept in Ayurveda. They say Vatic disorders, Vatavaran, Vatis, Vat, Ashiti, Vat, or Vat. Different type of Vatic disorders, they correlate with the neurological disorders. I don't contradict them, but I'm not the opinion that the Vatic disorders are neurological disorders. Because Vatic, it is the sthan of Medha, Kapha is sthan, CVA is the Kapha disorder also. And many disorders are related with the other doshas also. Avaran theory, I could not understand up till yet. Last 50 years, I am reading and interacting with the Avaran. And what is Vat? How Vat is involved in the neurological disorders? Still, I could not find a solution, scientific solution. What is Vat? Neurotransmitters are Vat, nerves are Vat, or this, why the Parkinson is also Vat, why the paralysis is also Vat. How these things are there, how the scientific things are happens with the Vat. I still cannot conclude the theories. What I'm doing nowadays, the epileptic seizures, the different things, the Parkinson, the different, Alzheimer's, the different, and the brain disorders, many CVAs, different type of many psychologicals. They all have a different regenerative process, degenerative process, and they all have a different pathology. They can be related with Vata because we have to nomenclate a epileptic seizure with an asthma. We just nomenclate. But this is lost, nothing related with the memory. Memory is different. And memory disorders, dementia, Alzheimer, this has no correlation with this asthma or anything. So, with the scientific understanding, I still could not found the clue, exact clue, what I should say what. Many persons may have the clue. Any person, but everybody will describe. What I'm doing in my practice daily. I'm treating almost 10 to 15 cases daily, giving the treatment in different disorders. About 400 patients in a month. And you can imagine these 400 patients, 100 to 150, they are the new patients. And more than third, one third is new and 2/3 are repeat patients. And they include all the disorders, not only neurological, chest also, heart also, liver also, kidney also, muscles also, digestion, many disorders. You can understand an Ayurvedic physician has to treat all type of disorders. And neurological disorders, they came very late, very late. I have seen the epileptic seizures came
after 6 months also, and after 20 years also, 30 years also, they came to Ayurveda. I see neurological Parkinson or like these disorders. They came very late to the Ayurvedic physician when they think Ayurveda can cure everything. Nothing is cured by. They are increasing by the modern treatment and any other disorders also. I have supplied one formula for every case. In all the 400 cases in a month, what I am putting a prescription, say, will surprise to, you will not believe these things. I have the 2/3 repeated patients and one formula in every case. One is the Churan, Bilvadi, Ampachak, or sometimes Shivakshar if the constipation is more. Hard motion is there, Shivakshar, otherwise Bilvadi, Ampachak, that is only Grahi. In every case, with the sex disorders also, I am giving 2 Kutas Ghanbati 2 times a day. Even in every, today also I have seen 3 neurological disorders. One from last 1.5 years taking treatment and improving, because he has taken treatment from last 10 years, young boy, improving. And I am being now famous for curing neurological disorders. In every case, I am giving Kutas Ghanbati 2 tablet BD with this churn and any specific drug also, just like in the chest disorders, Lakshmi Vilas, some heart disorders, there are now some brain disorders, Ekangadiras. And sometimes in the advanced cases, I use this one preparation like Rasraj or Mehta. That is very low doses, 1 tablet daily, alternate day or day, or sometimes after 3 days. Because this is a very costly drug, patient does not afford much. But I'm using these drugs also in advanced cases of Parkinson's, CVA, and other advanced disorders. Most of the cases, they recover after 3 months. The neurological cases and every type of cases, they recover. And they say me that patient is improving. How these things are improving, I am telling every time that everything I could understand, a gut is there. And gut lung axis, gut brain axis, gut liver axis, and gut skin axis, they are being identified in present era of modern system. Gut has trillions of microbes. And anyhow, every modern drug is diminishing the quantity of microbes because they are chemicals. They kill the good bacteria, they kill the bad bacteria, they kill the chemicals always kill the toxins negative to the body and kill the microbes also. But Kutas Ghanbati, Bilvadi, Grahi, these drugs, they protect mycobacteria, microbiota. They are in trillions. Trillion means 1 trillion, 1 lakh crore. They are trillions. Somehow I don't have a scientific data that how these are protecting these microbes. But protecting these microbes, I am claiming to relieve or revert most of the disorders of these are coming to the Ayurveda. By this, you will surprise that I am giving 2 Kotas Ghanbati per day, 4 Kotas Ghanbati per daily to every patient. This is surprising. And sometimes I am adding Arogya Vardhani, whether motion is hard. Motion is hard, that also I am adding Kotas Ghanbati. When motion is very hard, patients say, I go to motion for after 2 or 3 days. That is too hard.
In that case also, I put 2 quarters Granati 2 times a day, 2 Aragyavardhani Bhati 2 times a day. And I feel that patients are lived much than the Mukti, this other type of purgatives, laxatives we are giving. Then with these cases, I am living, curing the cirrhosis of liver with these cases. Many cases I have complained to be, the reports are normal, they are feeling to be normal. And cirrhosis of liver cases also, sometimes the neurological cases are at most improved. I don't say about these theories that Kalyana Grati is important or what Vacha is important or these many drugs described in Ayurveda. Brahmi may be important in the memory, but I find the Kutas Ghanbad is more important than memory because it gives microbiota and this increases the gut-brain axis, and you improve the memory by these drugs. You can add Brahmi also, syrup also, tablet also, 1 tablet is sufficient. Because memory has nothing to do with the brain functions. It is a self-generative mechanism why the person's energy and thought generates. And energy and thought is created by good microbes. Microbes are the source of energy in the body. And this energy is transformed into many types in the many forms, neurological forms, the metabolic forms. This energy is transferred to create a metabolic transformation and towards the cure for many diseases. At least I have not seen even single or 2 patients that complained your drug is have an adverse effect. Most of the 20% cases always come to every physician that your drug has caused adverse effect to me, and I am not improving, I am degenerating. But by this treatment, I have not seen hardly 5% cases which complaints of some anorexia, acidity, or 1 to 2% cases of rashes. Otherwise, rashes they disappear. The acidity also disappear itself without any medication. But I have not seen the adverse effect of these drugs in the body. Somebody say this causes constipation, but I have not seen the constipation. I can add the liver tablet also. Sometimes I don't add liver also. And with this simple theory, not what I cannot understand the theories, but by simple theory, I feel that if you practice, it is very simple. We are better manage the neurological disorders, whether it is brain functions, medulla functions, spinal cord functions, or whether it is general neuromuscular functions. So with this little, you can say, not a prescription, but little addition of the treatment and a theory of the treatment in the disorders. You say always one drug in every case, one theory in every case. But I feel this theory is remarkable because the last 1 or 2 years I have developed, after 50 years of my teaching experience, in last 2 or 3 years, I have developed this theory to be very effective. 10 years back, I am doing same type of practice, what others people say about the Parkinson and this. I'm treating this Parkinson is by this Vacha and this. उसको क्या कहते हैं उसको? Aphrodisiac drugs.
But now I'm not using these drugs very much in my practice. I'm using simple drugs, Bilvadi, Ampachak, Dharmastak, many times Shivachar, Kutas, Arogidardhani, sometimes Ekangavir, and sometimes some swan preparations. That too in a very low dose. Maximum 1 tablet daily. Though patient cannot afford the 1 tablet also, this is cost more than 1,000 rupees, more than 100 or 150 rupees per tablet. But this I applies in advanced neurological cases, and they improve dramatically. Dramatic improvement I have seen with these drugs. So thank you very much, Dr. Pawan Sharma, for inviting me for this short talk. Thank you very much, sir. So nice of you. We are really grateful to you. मैं अब डॉक्टर एसबी त्रिपाठी सर को सादर आमंत्रित करता हूँ. डॉक्टर एसबी त्रिपाठी सर. नमस्कार सभी विद्वानों को. आज का विषय है तंत्रिका संस्थान. हमारे गुरुजी थे, जब हम पढ़ने जाया करते थे तो हमारे साथ 2-4 लड़के क्वेश्चन पूछते थे, हम लोग भी पूछते थे और कहते थे गुरुजी हमको ये न बात समझ में आया, न पित्त समझ में आया, न कफ समझ में आया. तो उन्होंने कहा कि तुम बीएमएस नहीं, एमडी नहीं, पीएचडी नहीं, प्रोफेसर नहीं, डायरेक्टर बन जाओ, जब तक तुम बात पित्त कफ नहीं समझ लोगे तो 10 जन्म भी लोगे तो आयुर्वेद समझ में नहीं आए. ये मेरे वाक्य नहीं है, ये हमारे गुरुजी कहा करते थे. अगर आपको आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करना है और आयुर्वेद की दवाइयां देनी है और आयुर्वेद के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है कि बात क्या है, तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम? ऐसे अंधे में पत्थर मार देंगे, जो यदवा तदवा भविष्यति, जो भी होगा सो हो जाएगा. वो ये कहते थे प्रोफेसर काशीनाथ शास्त्री जी कि शरीर में छोटे से लेकर के बड़ी कोई ऐसी क्रिया नहीं है बात के चल गुण से और सूक्ष्म गुण से जो वायु के द्वारा न होती हो. ध्यान रखिएगा शब्दों का. छोटे से छोटे एक सेलुलर फंक्शन से लेकर के बड़े से बड़े प्रवर्तक चेष्टानाम उच्चावचानाम, सभी क्रियाएं छोटी बड़ी, हाथ पैर इंद्रियों के काम, उठना बैठना, देखना सुनना, चलना फिरना, बोलना, सब कुछ ये सब वायु के ही कार्य हैं और वो सूक्ष्म और चल गुण के कारण. अब सूक्ष्म गुण क्या है, चल गुण क्या है, ये हमें थोड़ा सा समझना होगा. नंबर 1. नंबर 2, शास्त्रों में बात के नानात्मज 80 है. इसका मतलब यही नहीं होता कि नानात्मज 80 ही है. बात की बीमारियां पित्तावृत भी होती हैं, कफावृत भी होती हैं, मेत्सावृत भी होती है. तीसरा, अभिघातज भी होती है. अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है और एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का सर्वाइकल फ्रैक्चर होता है, किसी का लंबर फ्रैक्चर होता है, तो उसके भी दोनों पैर पैरालाइज्ड हो जाते हैं और न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो जाता है, उसका यूरिन नहीं पास होता. तो जो वायु है, जितनी हमारी क्रियाएं हैं बात की, प्राण से लेकर के उदान समान ब्यान तक, सर से लेकर के नीचे नाखून तक, अगर इनमें कहीं भी बात के चल गुण का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, सूक्ष्म गुण का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो वो आर्गन काम नहीं करेगा. सर्वाइकल फ्रैक्चर में, लंबर फ्रैक्चर में, जहां दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाती है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर होता है, वहां पे उनको आता ही नहीं है यूरिन, प्रेशर ही नहीं आता और बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है. वहां बात का सूक्ष्म और चल गुण का ऑब्स्ट्रक्शन है, आ ही नहीं रहा है. तो जो वातज व्याधियां हैं, एक तो प्योर होती है वात से, एक शरीर से होती है, एक वातावृत भी होती है, वायु का वायु से भी आवरण होता है, पित्त का भी आवरण होता है, कफ का भी आवरण होता है, और एक अभिघातज भी होता है. एक मेरे अनुभव में और आया है, जन्म बल प्रवृत्तज. जब बच्चा पैदा होता है, उसमें डॉक्टर की लापरवाही से किसी कारण से बच्चा जब गिर जाता है और देर में रोता है और 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी हो जाता है. और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो
नहीं चल पाता नॉर्मल में। ये पूरे पूरे ब्रेन के पूरे प्राण वायु का फंक्शन डिस्टर्ब है। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में छोटे बच्चों में भी देखा है कि जो ऐसे बच्चे आए हैं 6-6 महीने, साल साल 2-2 साल पड़े हुए हैं, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा एलोपैथिक से, और वो आयुर्वेद में आए हैं छोटे बच्चों को लेकर के, तो ऐसे पेशेंटों को मैंने जो ट्रीटमेंट दी है उनमें कुमार कल्याण रस प्रमुख है। कुमार कल्याण रस, मुक्ता सुक्ति, थोड़ा सा लहू भस्म, प्रवाल पिष्टी मिला करके 30 मिलीग्राम की मात्रा से 2 या 3 बार सीतोपलाद में मिला के थोड़ा थोड़ा बच्चों को दिलाते थे। और जो बच्चा साल भर में न चलता था, न बोलता था, न उसकी एक्टिविटी थी, वो एक्टिविटी सेरेब्रल पॉल्सी में बच्चों को देखी गई है। सेम चीज ऑटिज्म में भी देखी गई है। ये भी प्योर बाताजी है, जिसमें ब्रेन का विकास ही नहीं होता बच्चे का। ये बाताज 80 प्रकार के बीमारों के अतिरिक्त उनमें भी यही कुमार कल्याण रस का योगदान है। छोटे बच्चे में हम कहाँ देंगे अन्य चीजें, इतना छोटा बच्चा है, वहां तो स्वर्ण प्राशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्वर्ण योग काश्यप ने भी बताया है, चरक ने भी बताया, और हम लोग भी यूज करते हैं। तो जितने वात व्याधियां हैं उन सब में जो वात का प्रमुख गुण है चल गुण और सूक्ष्म गुण है, उसमें विरोध होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें कार्य की हानि होती है। इसलिए आदमी ना बोल पाता है, ना सुन पाता है, ना देख पाता है। किसी के टेस्ट का चला जाता है, किसी की स्मेल चली जाती है, किसी का हाथ नहीं उठता, किसी का एकांग होता है, कोई का अर्धांग होता है, किसी का सर्वांग होता है। और जब फ्रैक्चर हो जाता है तो लोकलाइज भी होता है। ऐसे लोकलाइज्ड केसेस में अब प्योर देखिए वात व्याधि तो है नहीं, दोनों पैरों से तो पैर चल नहीं पा रहा है। मेरे पास 3-4 पेशेंट ऐसे हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर के, जो पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, एक्सीडेंटल है, उनको यूटीआई बार बार हो रहा है। हर बार डॉक्टर जांच कराते हैं और उनको एंटीबायोटिक देते हैं और फिर हो जाता है। ऐसे पेशेंट को यहाँ केवल स्वर्ण योग नहीं काम करता, ये मेरा भी इसमें मत है। यहाँ हमने ऐसे पेशेंटों को इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आयुर्वेद के सिद्धांत से तिक्त रस वाली औषधियों का प्रयोग किया। उनमें प्रमुख है सुदर्शन घनवटी और चंद्रप्रभावटी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो 2-2 साल 4-4 साल से न्यूरोजेनिक ब्लैडर के पेशेंट ठीक नहीं होते थे, इन्फेक्शन होता था, वो 6 महीने के ट्रीटमेंट में आज तक उनको फीवर नहीं आया, मात्र चंद्र प्रभावटी और सुदर्शन घनवटी से। कोई स्वर्ण योग नहीं है। तो स्वर्ण योग वहां जरूरी है जहां आपके बात के चल गुण को बढ़ाना है। लेकिन जहां ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पैरालिसिस की वजह से न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया या और कोई मसल्स वीकनेस हो गई, तो वहां आपको अन्य ट्रीटमेंट भी करनी पड़ेगी। दीपन पाचन तो सबको देना है। दीपन पाचन के और अग्नि के बिना तो शरीर चलते नहीं। दूसरा, जो वात व्याधि है बहुत बड़ा विषय है, इसको एक दिन में नहीं कवर किया जा सकता। इसमें कोई एक एक रोग आप ले, जैसे अर्धांगवात, सर्वांगवात, एकांगवात, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अपस्मार, अलग अलग अगर हम लेवे, या सेरेब्रल पॉल्सी या ऑटिज्म, तो वो सब वात व्याधि में ही आते हैं। और बात वो है जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं छोटी सी बड़ी संपन्न होती हैं, वो बात है। बाद में उसकी सब डिवीजन है। तो मेरा केवल कहने का मतलब ये है, जो मेरे अपना अनुभव है, कि जो प्योर बात के रोगी आते हैं उनमें स्वर्ण योग, गुगुल योग, दीपन पाचन काम करता है, और शिरोधारा, स्नेहन, स्वेदन और मृदु विरेचन ही काम करता है। मात्र औषधियां नहीं करती पैरालिसिस में। स्नेहन, स्वेदन, शिरोविरेचन और मृदु संशोधन, ये मेरे प्रैक्टिकल अनुभव में है। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही सरल शब्दों में क्लियर किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। अग्निहोत्री सर। भाई, विद्वान हो तो ऐसे हो। ऐसी आपने आयुर्वेद की ज्ञान गंगा चलाई कि आयुर्वेद के फंडा, आयुर्वेद के सिद्धांत समझना है तो आपकी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि चलो सूक्ष्म पर ही आपने सारी तंत्रिका विकार को एकदम लाके
उसके न्यायालय में खड़ा कर दिया। पहले हम वात अवात के सूक्ष्म और चल गुण पर चर्चा कर ले, आवरण का सिद्धांत, और फिर मैनेजमेंट सिद्धांत अपने आप आ जाएगा। औषधियां तो बहुत चलते बहुत चलते ही अच्छा, मतलब हृदय स्पर्शी हो गया और ज्ञान संपन्न। क्योंकि प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने जो थीम रखी वो भी सीधी सीधी उनकी जो थी वो गट ब्रेन एक्सिस पर आधारित थी। और वहां से दीपन पाचन आपने एक शब्द में लास्ट में बता ही दिया। दीपन पाचन को मैनेज करते हुए और अंतर्गत हमें कब्ज विबंध नहीं रखना है, ये पहली शर्त है। वहां भी तो उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन ही है, तो उसमें आवरण सिद्धांत सीधे माने या देवल प्रणाम करके माने, बात यही है कि हम उसको स्वीकार करें। और आदरणीय परम आदरणीय प्रोफेसर काशीनाथ शास्त्री जी का आपने स्मरण करा के ये चीजें और उनके नाम से भी और मजबूत कर दी, प्रतिष्ठित कर दी। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत आभार। आप थोड़ा ऊपर करिए, आपका फेस पूरा नहीं आता है। हाँ हाँ, और थोड़ा और, यस, यहाँ पर सेट करिए, भाई फोटो खराब हो जाती है। अरे लो भैया, ले लो। अरे नहीं नहीं नहीं, गुरुजी के यहाँ हम लोग कहते थे ना जा करके, हमें समझे में नहीं आता। हाँ, नहीं सही बात। कहते थे तब तुमको तब तीन तो जन्म में स्थिति समझ में होती नहीं आएगा, कहते थे नहीं, 3 जन्म में समझ में नहीं आएगा तुमको, अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो। एक तब जन्म तो की क्या बात होता वो है। तो शैशव काल था छात्र जीवन का, वो हाँ। तो उसमें तो लगता ही था। चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब अपने अंतिम वक्ता के रूप में डॉक्टर निशांत शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूँ। वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। और हमारे दिनेश साहब भी नहीं जुड़ पाए। हरिओम। हरिओम हरिओम। जुड़ गए जुड़ गए जुड़ गए। जहाँ कहीं भी हरि है वहीं ओम है भाई। हरिओम। हरिओम। सबसे पहले इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वतगण को प्रणाम करते हुए और मेरे से पूर्व वक्ता सभी को वंदन करते हुए इस विषय पर थोड़ा जो है ये मैं बात करना चाहूंगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो हम बात कर रहे हैं और वात व्याधि या फिर उरुस्तंभ या फिर आवरण की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों की क्लासिफिकेशन या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थोड़ी जो है ये अलग है और उस चीज को हमें समझना भी पड़ेगा। मॉडर्न के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन हुई है वो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के आधार पर हुई है। तो हम जो भी बात कर रहे हैं ये ब्रेन डिसऑर्डर्स की कहेंगे या फिर नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की कहेंगे, पर आयुर्वेद की क्लासिफिकेशन ये स्ट्रक्चर की जगह पर फंक्शनल बेसिस पर ज्यादा है। जैसे हम बात करते हैं कुछ एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, जैसे इन्फेक्शंस हैं, तो उनका कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन जो है ये ज्वर के साथ ही मिलता है और हमें ज्वर के हिसाब से ही इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, चाहे फिर वो ट्यूबरकुलोमा हो, मेनिंजाइटिस हो, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस हो या फिर सेरेब्राइटिस हो। जब हम नर्व फंक्शंस की बात करते हैं तो एसिटिल कोलिन की अगर मायस्थेनिया ग्रेविस की बात करते हैं तो ये मांस की दृष्टि जो है इसके आधार पर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। अब हम सेंसरी अपरेटस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे कि गुलियन बेरी सिंड्रोम है, सेरिंग फॉर्मेशन है। तो ये डिसऑर्डर्स जो हैं ये हमें वात व्याधि में नहीं, पर ये उरुस्तंभ के साथ जो है ये हमें समझना पड़ेगा। फुट ड्रॉप है, हैंड ड्रॉप है, पैराएस्थेशिया है, ये कहीं ना कहीं ये उरुस्तंभ के साथ मिलने वाले विकार हैं, जहां पर अन्य नेय ही संभोग्न ऊरु पादौ चमन्यते या फिर अविधेय परिस्पंदम जनय तल्प विक्रमम, जहां पर लोग दूसरे किसी को अपना हाथ या पैर उठाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। और यहाँ पर शीत स्पर्शम न वेत्ति च, जब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर सिरिंग फॉर्मेशन की ट्रीटमेंट की या फिर इसी प्रिंसिपल के आधार पर जब गुलियन बेरी सिंड्रोम की या फिर स्टॉकिंग सिंड्रोम की ट्रीटमेंट हम करते हैं तो इसमें काफी हद तक फायदा दिखता है।
ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं थोड़ी जो है ये उष्ण औषधि जो कि आवरण को ठीक करती हो, यहाँ पर तेंदुक का प्रयोग या फिर भल्लातक का प्रयोग जो है ये किया है। चिंचा भल्लातक एक जो फॉर्मुलेशन है जिसमें दो ही चीजें हैं, चिंचा और भल्लातक। भल्लातक जैसे हम जानते हैं कि ये काफी उष्ण है और तीक्ष्ण औषधि है, तीक्ष्ण वीर्य प्रदान औषधि, और इसको विष भी कहा गया है। तो उसका एंटीडोट ये चिंचा मतलब मिला करके उसी की गोली बनती है। तो दो ही चीज इसमें है, तीसरी कोई चीज इसमें नहीं है। और ऐसी कंडीशन में जब हम इसको यूज करते हैं तो इसमें हम लाभ होते हुए देखते हैं। पहले जो सेंसरी एपरेटस है, सेंसरी फंक्शंस में इंप्रूवमेंट होता है, उसके कारण मोटर फंक्शंस में भी ग्रेजुअली उसके बाद हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम वात व्याधि की बात करते हैं तो दो चीजें सामने आती है, एक तो जो है ये आवरण है और दूसरा वात व्याधि में नाड़ियों की रोग है। जैसे अगर हम श्रंस भ्रंश व्यास की अगर हम बात करें तो ये केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं, ये कॉर्ड कंप्रेशन या फिर कंप्रेशन या फिर या फिर डायलेटेशन उसके साथ जो है ये हमको देखने में मिलता है। तो पूरा वात व्याधि कहना ये भी जो है ये पूरी तरह से जो है ये ठीक नहीं होगा, पर ये कहीं ना कहीं जो है ये वात व्याधि के साथ संबंध रखता है। अब हम बात करें वात व्याधि के ही संदर्भ में, तो वात व्याधि को ब्रॉडली या फिर क्लिनिकली हम इनको पांच अलग अलग फॉर्म में हम समझ सकते हैं। एक है वेदना प्रधान वात व्याधि, जहां पर जो प्रेजेंटेशन होगा ये पेन या फिर रुझा के साथ संबंधित होगा। पेशेंट को पेन हो रहा है और पेन के कारण उनकी मोबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है या फिर पेन के कारण उनको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि आर्थराइटिस प्रोन है या फिर न्यूरल्जिक प्रोन है। न्यूरल्जिया में ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया जिसे हम अर्दित कह सकते हैं। अर्दित की अगर हम क्लासिकल चरक का डेफिनेशन देखें तो चरक कहते हैं कि अर्दित में वेग प्रदान है। आज जो हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, चरक सुश्रुत ने जो अर्दित का वर्णन किया है ये एब्सोल्युटली फेशियल पैरालिसिस के साथ मिलता हो ऐसा है, पर चरकीय अर्दित जो है ये थोड़ा अलग है। और चरकीय अर्दित ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया या फिर न्यूरल्जिक पेन फेशियल न्यूरल्जिया के साथ कंपेरेबल है, जहां पर पेशेंट को वेग आता है और वेग जैसे ही शांत हो जाएगा उनको एब्सोल्युटली रोगी नॉर्मल हो जाएगा। और ये फेशियल पैरालिसिस में वेगात्मक नहीं है। तो ये एक वर्ग हो गया कि वेगात्मक। यहाँ पर वेगात्मक जितने भी विकार हैं यहाँ पर जो मेडिसिन काम करती हैं इसमें दशमूल है, अश्वगंधा है, गुगलू, सामान्य रूप से जो ब्रूहण करने वाली गुगलू कल्प हैं जैसे कि योगराज गूगल, महायोगराज गूगल और गोक्षरादि गूगल या फिर चंद्रप्रभा, ये यूजुअली अच्छा रिजल्ट्स देती हैं। यहाँ पर अग्निटुंडी शूल प्रशमन के रूप में इसको दिया जा सकता है और शूल प्रशमन में इससे जो है ये काफी अच्छा लाभ हमको देखने को मिलता है। दूसरा स्तंभ प्रधान वात व्याधियां कि जो कि इसमें सबसे पहला रोग आएगा ये है मन्यास्तंभ, अनुस्तंभ, पक्षाघात। तो ये दूसरा वर्ग हो गया कि जहां पर पेशेंट को सिम्टम्स हो रहे हैं वो स्तंभ होने के कारण या फिर लॉस ऑफ फंक्शन होने के कारण हमको देखने को मिल रहे हैं। लॉस ऑफ फंक्शन में बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रयोग करने पड़ेंगे। बाह्य प्रयोग भी हमें करना पड़ेगा और आभ्यंतर प्रयोग भी हमें करना पड़ेगा। बाह्य प्रयोग में बाह्य प्रयोग में अभ्यंग और स्वेदन, ये इसका जो है ये डेफिनेटली एक अच्छा रोल हमको देखने को मिलता है। तीसरा जो वर्ग है ये है शोष प्रधान वात व्याधियां। चौथा वर्ग है
ये कंप प्रधान वात व्याधियां, और कंप प्रधान वात व्याधि में मूर्ध तेल का उपयोग हम कर सकते हैं। तो थोड़ी मुझे अभी दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे ड्राइविंग में काफी प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं अपने विषय को पूर्ण न्याय ना देते हुए भी और इस सभा से क्षमा मांगते हुए इस क्षण सभा से जाने की अनुमति मांग रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच निशान जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो अग्निहोत्री सर, प्लीज कंक्लूड। जी, आपने बहुत ही विषम परिस्थितियों में मैनेज किया आदरणीय प्रोफेसर शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो है ही, लेकिन आज ये भी एक हमारी इस व्यवस्था में कड़ी जुड़ गई कि अब हम मोमेंटम में भी अपनी वेबिनार चलाते हैं और हमारे गेस्ट स्पीकर्स मने वात व्याधि को दूर करते हुए चल स्थिति में भी अपना प्रेजेंटेशन सक्सेसफुली दे पाए। पूरा हमको सिग्नल मिला, आपकी पूरी बात समझ आई, बहुत ही अच्छे